Hi, all the students. Welcome once again. So, my name is Anil Choudhary, and today we are going to take the sixth passage in the series of 100 passages which we are going to discuss for CAT 2024. And today, students, the passage which we are going to discuss, it's all about the importance of grammar. So, the topic of the passage is not so tough to understand, and even when you will see the passage, even language is not so tough. But that does not mean that the overall passage will be easy, because possibly the options may not be so easy. And moreover, students, there is only one criteria, whether we have understood the passage well or not. And that is how many correct answers we are able to give. I urge all the students to become result oriented whenever you solve RC passages. I see many times students come and say that, sir, passage easy था, बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया. But you people truly understand, उससे काम नहीं होता है. Ultimately, what is more important is how many correct answers we are getting. So you people should become result oriented and focus on only one thing, whether I am able to get the correct answer or not. तो जब स्टूडेंट्स इतना फोकस्ड होकर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की तैयारी करोगे ना, यू विल सी लाइक एक्चुअली जो कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, जो कमांड डेवलप होगी, दैट इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग. So students, I'm going to show the passage first, and I urge all the students to read the passage with the curiosity and interest. I believe that किसी भी पैसेज को पढ़ने में स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे ना, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डेवलप करोगे, द चांसेस ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर विल ऑलवेज बी हाई. बट कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बड़े पैसिव रीडर होते हैं. यू पीपल शुड बिकम एन एक्टिव रीडर. दैट मीन्स यू नीड टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ द ऑथर. तो स्टूडेंट्स, दैट इज वॉट यू नीड टू डू. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू शो द पैसेज टू यू. आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू पॉज इट, थरोली गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज. अच्छी तरह से पढ़ो, बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है. बट यस, इंडीड आई नो दैट कि 2-3 पैराग्राफ ऐसे हैं जिनके कुछ सेंटेंसेस आपको कंफ्यूज ज़रूर करेंगे. सो पॉज इट, गो थ्रू इट थरोली. कम से कम 2 बार इस पैसेज को ज़रूर पढ़ो. एट द सेम टाइम, वेर एवर यू कम अक्रॉस एनी न्यू वर्ड, उसे स्टूडेंट्स अलग से नोट करने की हैबिट भी डेवलप करो. ओके, आई गेस यू हैव गॉन थ्रू दिस. डन. चलिए, coming on students, this becomes the next part. Yes. चलिए, पूरा passage समझने के बाद, now you people will have to understand, okay, what is the overall theme of the passage, what actually is the main purpose of writing the passage. तो हमेशा students आप main purpose पर focus ज़रूर करो, because the moment you understand what is the main purpose, actually होता क्या है ना students, किसी भी passage में author ने बहुत सारी बातें डिस्कस की हुई होती है. सो इफ आई डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल यू शुड नॉट लूज योर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मेन पर्पस. सी व्हाट हैपेंस इज, जब मैं क्लास लेता हूँ, हो सकता है क्लास में मैं 10 बातें करूँ, बट फिर भी जो मेन पर्पस ऑफ टेकिंग द क्लासेस, दैट इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर कैट. द स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमेशा फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज. सो इवन इफ द स्टार्ट इज डिफरेंट, इवन इफ इन बिटवीन किसी पैराग्राफ में हो सकता है ऑथर थोड़ा सा डिविएट भी हो जाए, बट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, दैट इज समथिंग व्हिच प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. एंड स्टूडेंट्स, क्रक्स ऑफ द टॉपिक पर उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं. चलिए, सो दीज 2 आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज. यस, पॉज इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड डिसाइड विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. MCQs वाले क्वेश्चंस में माय ऑनेस्ट सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग है ना हमेशा इनडिसाइसिव मत रहो. टेक अ फाइनल डिसीजन, इवन इफ द आंसर इज रॉन्ग, बट स्टिल यू पीपल टेक अ फाइनल कॉल. डिसाइडेड? डन? क्या लगा, क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट और इजी हैं? आई डोंट थिंक सो. ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम. 3 more questions. So in total 5 questions are based on this passage. ओके, चलिए पॉज करो, अच्छी तरह से समझ लो. एंड नाउ स्टूडेंट्स, वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस दिस पैसेज. तो पूरी तरह से मेरे साथ सॉल्व करना. आई टेक माय ओन टाइम. बट स्टूडेंट्स, एक पैसेज जब हम ढंग से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसका एडवांटेज बहुत सारे पैसेजेस में भी ज़रूर आता है. सो वी आर नॉट सॉल्विंग ओनली 5 क्वेश्चंस, वी आर एक्चुअली डेवलपिंग अ कॉम्पिटेंसी ऑन दी ओवरऑल टॉपिक एंड द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस एज वेल. ओके, चलिए, so now let us begin. All right,
चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस पूरे पैसेज को. जस्ट 1 सेकेंड. यस. So vocabulary used in speech or writing organizes itself in 7 parts of speech. 8 if you count interjections such as oh, gosh and forget about it. अब स्टूडेंट्स सी कभी कभी ऐसे बिल्कुल नए वर्ड्स आ जाते हैं. So you people try to understand. Even if you are able to understand the meaning of this word, well and good. इसको अपन कैसे प्रोनाउंस करते हैं? Forget about it. And actually students, it is nothing else. इसका मीनिंग होता है forget about it. Okay, exactly. All right. But चलिए, the best part happens to be it is given in the bracket, and even if I'm not able to understand the meaning, okay, that's okay. The students, oh gosh, forget about it. Oh my God, my goodness, hooray. All these are examples of interjections. So the very first line of the passage, इसको पढ़ते ही स्टूडेंट समझ में आता है कि we are actually discussing the various parts of speech. So थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि दिस टॉपिक इज अबाउट लैंग्वेज. अब अगर इंटरेस्ट है तो कंटिन्यू, अदरवाइज बेटर ऑप्शंस हैं तो यू कैन स्विच ऑल्सो. फिलहाल तो इस वीडियो में यू विल हैव टू डू दिस पैसेज ओनली, यू डोंट हैव अ चॉइस. सो वोकैबुलरी यूज्ड इन स्पीच और राइटिंग ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इन 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच. अच्छा, यू पीपल नो विच आर द 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच? एब्सोल्युटली. जितनी भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में स्टूडेंट्स, द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, they actually belong to these 7 categories, which are actually known as parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition and interjection. So interjection becomes the 8th one. अगर मैं इसको include ना करूं तो there are 7 parts of speech. Communication composed of these parts of speech must be organized by rules of grammar upon which we agree. When these rules break down, confusion and misunderstanding result. So bad grammar produces bad sentences. My favorite example from Strunk and White is this one. As a mother of 5 with another one on the way, my ironing board is always up. Students try to understand. ये जो example दे रखा है ना, that is to show that कि जब हम ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो किस तरह से एक सेंटेंस जिसका अर्थ कुछ और है उसका अनर्थ हो जाता है. अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली इनको अपन कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर्स. कई बार स्टूडेंट जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट विच पर्टिकुलर सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट विच पर्टिकुलर नाउन. एनीवे स्टूडेंट्स, ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इट इज़ जस्ट अ जोक, एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग दिस एग्जाम्पल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट अगर ग्रामर के रूल्स को अपन फॉलो नहीं करते हैं, हाउ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस एंड हाउ hilarious and humorous it becomes. Okay, इसलिए स्टूडेंट्स अगर आप इसको नहीं भी समझ पाए तो there is no problem at all. So my favorite example from Strunk and White, ठीक है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स ग्रामर की बुक का नाम है, जैसे रन एंड मार्टिन है ना, वैसा ही. एनीवे स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग मैं बता देता हूँ. एज अ मदर ऑफ 5, ओके, देन आई एम टेकिंग अ कॉमा विथ अनदर वन ऑन द वे. ठीक है, कॉमा क्लोज्ड, माई आयनिंग बोर्ड. Now you people try to understand, ये जो mother of 5 है ये कौन है? Ironing board? Is it? No. Actually that lady is talking about herself, but the way she made the sentence, okay, the whole meaning changes. So इसीलिए students, we have to be careful about using the rules of grammar. That is the main purpose of writing the first paragraph. अब कई बार स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि सर जब हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं, द मोमेंट वी कीप प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ्स, तो जो पीछे लिखा होता है हम उसे मिस कर देते हैं. स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है विजुअलाइज करना. आप है ना विजुअलाइज कर लो कि जैसे फर्स्ट पैराग्राफ अब मैंने दिमाग में विजुअलाइज कर लिया. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर. एंड द की सेंटेंस इज बैड ग्रामर produces bad sentences. So the first paragraph talks about, yes, we people should follow the rules if we really want to make proper sentences. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, if it is possible to visualize well and good, और अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सको तो इसी पैराग्राफ के साथ कहीं पर पेपर पे नीचे एकदम शॉर्ट में उसकी समरी लिख दो. ओके, तो ये भी एक छोटा सा तरीका हो सकता है ताकि बार बार हमें पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़े. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ इज डन. Coming on the second one, nouns and verbs are the 2 indispensable parts of writing.
indispensable, which cannot be avoided, something which is compulsory, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं indispensable. So nouns and verbs are the two indispensable parts of writing. Without one of each, no group of words can be a sentence. Since a sentence is, by definition, a group of words containing a subject which is a noun and a predicate which is a verb. और उसके बाद स्टूडेंट्स आई हैव टेकन ए सेमी कोलन. अच्छा, सेमी कोलन अपन कहाँ यूज करते हैं? टू रिलेट टू सेंटेंसेस. सेमी कोलन में भी स्टूडेंट्स वी हैव टू टेक अ स्मॉल पॉज ओनली, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लिया. इसका मतलब है ये दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, and that is the reason I have used semicolon here. So these strings of words begin with a capital letter and end with a period. Period का मतलब है full stop. And combine to make a complete thought which starts in the writer's head and then leaps to the readers. तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स सेकेंड पैराग्राफ में we are talking about the importance of a noun and a verb. And we say that जब तक there is a proper combination of noun and verb, सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होता. अंश सेंटेंस के बारे में वी आर गिविंग सम मोर डिटेल्स कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हमेशा एक फुल स्टॉप से एंड होता है. तो सेकेंड पैराग्राफ इज ऑल्सो नॉट सो टफ टू अंडरस्टैंड. एंड मोरओवर स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा पहले से पता है कि व्हाट इज अ सेंटेंस, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. दैट मीन्स अ नाउन एंड अ वर्ब. तो पहले से अगर पता है तो पैराग्राफ पढ़ना विल बिकम ईजियर फॉर अस. चलिए आगे बढ़ते हैं. Must you write complete sentences each time, every time? It's a question. So the author is asking a question. क्या हमें स्टूडेंट्स हमेशा एक कंप्लीट सेंटेंस ही लिखना चाहिए? Perish the thought. Perish का मतलब होता है to leave the thought. इस थॉट को डिस्ट्रॉय कर दो. अंडरस्टैंड. Perish का मतलब होता है to destroy. इसका मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन है, क्या हमें हमेशा एक कंप्लीट सेंटेंस ही बनाना चाहिए? ऑथर कहता है perish the thought. इसका मतलब है ऐसा नहीं है. अंडरस्टैंड. सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव टू ऑलवेज मेक कंप्लीट सेंटेंसेस. इफ योर वर्क कंसिस्ट ओनली ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड फ्लोटिंग क्लॉजेस. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, क्लॉजेस का मतलब भी और कुछ नहीं होता, सेंटेंसेस ही होता है. इवन इन अ क्लॉज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब. बट एक क्लॉज जो है वो पॉसिबली इनकम्प्लीट भी हो सकता है. सो इफ योर वर्क कंसिस्ट ओनली ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड फ्लोटिंग क्लॉजेस, the grammar police aren't going to come and take you away. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आपने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं भी बनाया तो ग्रामर पोलिस, इसका मतलब है जो लोग ग्रामर पढ़ाते हैं या पॉसिबली जो ग्रामर के रूल्स हैं या जो लोग ग्रामर को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, दे आर एनीवे नॉट गोइंग टू कम एंड कैच यू, टेक यू अवे. स्टूडेंट्स, ग्रामर पोलिस एक्चुअली बिकम्स अ मेटाफर हियर. तो यहाँ पर कोई पुलिस की बात नहीं हो रही है, बट दीज पीपल हु आर टू पर्टिकुलर अबाउट ग्रामर, तो दे आर नॉट गोइंग टू कम एंड टेक यू अवे. तो इसका मतलब ये होता है, यस हम लोग फ्रेगमेंटेड एंड इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. इवन विलियम स्ट्रंक, दैट मुसोलिनी ऑफ रेटरिक. अब स्टूडेंट समझना, मुसोलिनी कौन था? मुसोलिनी इटाली, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इटाली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब मुसोलिनी ही वॉज बेसिकली अ डिक्टेटर, मतलब जो कह दिया सो फाइनल. अंडरस्टैंड. तो मैंने विलियम स्टन को कैसे डिस्क्राइब किया? द मुसोलिनी ऑफ रेटरिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटरिक? वेयर एक्चुअली यू ट्राई टू मेक सच सेंटेंसेस विच आर फैंटास्टिक, विच आर इंप्रेसिव एंड विच आर वेरी मच प्रॉपर. जहाँ पर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल प्रॉपर ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हो एंड बहुत ही इंप्रेसिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हो. तो रेटरिक का मतलब होता है sometimes to exaggerate or to make the things very effective and impressive. यहाँ पर students, when I say the Mussolini of rhetoric, इसका मतलब है I'm talking about this person as this man is very particular about grammar. Even this person says, even this person recognize the delicious pliability of language. So delicious का मतलब good and pliability का मतलब होता है flexibility. तो सोचो स्टूडेंट्स, विलियम स्ट्रंक भी ऐसा आदमी जो ग्रामर को लेकर बहुत पर्टिकुलर है. इवन दिस पर्सन recognizes the flexibility of language. It is an old observation, he writes, that the best writers sometimes disregard the rules of rhetoric.
तो स्टूडेंट्स विलियम स्ट्रंग कहते हैं इट्स एन ओल्ड ऑब्जर्वेशन द बेस्ट राइटर्स इवन दे समटाइम्स डिसरिगार्ड द रूल्स ऑफ रेटरिक। इसका मतलब है जो बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर है या जो रूल्स ऑफ ग्रामर है, कई बार ऑथर्स इवन द बेस्ट राइटर्स दे डिसरिगार्ड इट। Yet he goes on to add this thought, which I urge you to consider. Unless he is certain of doing well, the writer will probably do best to follow the rules. Now, you people try to understand. Unless he मतलब कौन? The writer. So, unless he is certain of doing well, see students, it's a very interesting line, and understanding this line is very important to give answers to at least one or two questions. So, try to understand what the line says. विलियम स्ट्रंग का ये स्टेटमेंट है एंड ही सेज दैट अनलेस इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल द राइटर विल प्रोबेबली डू बेस्ट टू फॉलो द रूल्स। सबसे पहले तो विलियम स्ट्रंग ये एक्सेप्ट करते हैं कि इवन द बेस्ट ऑफ द राइटर्स समटाइम्स दे डिसरिगार्ड द रूल्स ऑफ ग्रामर, द रूल्स ऑफ रेटरिक, मतलब यहाँ पर रूल्स ऑफ ग्रामर। बट साथ में विलियम स्ट्रंग ये भी कहते हैं कि कोई भी राइटर रूल्स ऑफ ग्रामर को तभी डिसरिगार्ड करता है व्हेन ही इज सर्टेन दैट ही इज डूइंग वेल। इसका मतलब है ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करने से भी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, अंडरस्टैंड। इवन इफ आई डिसरिगार्ड द रूल्स ऑफ ग्रामर स्टिल आई एम डूइंग वेल। इफ अ राइटर इज कॉन्फिडेंट हियर देन ओनली ही डिसरिगार्ड्स द रूल। बट इन केस अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ओके, तो वहां पर राइटर हमेशा कोशिश करेगा कि वो ग्रामर के रूल्स को फॉलो जरूर करे। तो दिस इज व्हाट विलियम स्ट्रंग्स ऑब्जर्वेशन इज। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट होते हैं इस पॉइंट से, क्या सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हो सकते हैं? द ऑथर सेज यस, एंड टू सब्सटेंशिएट हिज पॉइंट ही इज कोटिंग विलियम स्ट्रंग। वो सेज दैट ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो नहीं करते, बट ही सेज दैट अ राइटर डज इट ओनली व्हेन इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अदरवाइज राइटर्स ग्रामर के रूल्स फॉलो करेंगे, वो तभी इसको फॉलो नहीं करते when they are certain that they are doing well by not following the rules of grammar. That is what the meaning of this particular paragraph is. Still students, अगर थोड़ा सा confusion है, what you people can do is pause it, इस paragraph को 2 बार वापस से पढ़ो, and then you will actually come to know what I mean to say. फिर भी students आपको लगता है कि थोड़ा सा wait and watch करना चाहिए, अगर clarity नहीं मिल रही है ना, wait and watch। अपन जैसे ही सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, यू विल एक्चुअली कम टू नो व्हाट एक्चुअली दिस पैराग्राफ एंड दिस लाइन इज टॉकिंग अबाउट। तो जस्ट होल्ड ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द टेलिंग क्लॉज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से द टेलिंग क्लॉज, टेलिंग का मतलब है द इंपॉर्टेंट क्लॉज। हियर इज अनलेस इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल। If you don't have a rudimentary grasp of how the parts of speech translate into coherent sentences, coherent का मतलब है logical sentences, how can you be certain that you are doing well? How will you know if you are doing ill for that matter? The answer of course is that you can't and you won't. One who does grasp the rudiments of grammar, rudiments का मतलब है basics of grammar, finds a comforting simplicity at its heart, where there need be only nouns, the words that name, and verbs, the words that act. So students try to understand the most important clause here is unless he is certain of doing well. अब वापस से उस स्टेटमेंट को समझो। विलियम स्ट्रंग ने क्या बोला था? कोई राइटर ग्रामर के रूल को तभी डिसरिगार्ड करता है if he is confident that he is doing well. But the author raises a question. The author says that unless the writer understands the basics of grammar, how he will come to know that whether he is doing well or not? So to understand whether he is doing well or not, it is important to understand the rudiments or the basics of grammar. And when I talk about the basics of grammar, what do we mean by this? It is understanding nouns and verbs. That is the point. So students, in totality, अगर मैं third या fourth paragraph को explain करूं, the point happens to be the author says that okay, whatever you people do, even if you want to disregard the rules of grammar, it is important to understand the basics of grammar first. So unless you understand the basics, you will never know when to disregard the rules of grammar. That is what the basic point of these 2 paragraphs is. Okay? चलिए anyway, अपन questions देखेंगे। Options में students अगर मुझे और clarification की जरूरत होगी, I'll give. Otherwise students, whatever I have discussed,
That is more than sufficient as of now. So you try to understand the overall gist of these two paragraphs. And the author wants to highlight that understanding the basics of grammar. And when I talk about basics, it includes nouns and verbs. तो ये अंडरस्टैंडिंग तो कम से कम होनी ही चाहिए. अंडरस्टैंड. Take any noun, put it with any verb, and you have a sentence. It never fails. Rocks explode, Jane transmits, mountains float. These are all perfect sentences. So many such thoughts make little rational sense, but even the stranger ones, like plums defy. Okay? तो स्टूडेंट्स आप देखो ये भी अपने आप में सेंटेंस है. इवन इफ दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज वन. हम जनरली नहीं बनाते, बट फिर भी स्टूडेंट्स अगर किसी बुक में प्लम्स डिफाई लिखा भी है, ओके, तो भी स्टूडेंट्स हैव अ काइंड ऑफ पोएटिक वेट दैट इज नाइस. इन सब का अपना मीनिंग होता है. अंडरस्टैंड. इवन इफ दीज आर नॉट परफेक्ट सेंटेंसेस. ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं. एंड सी स्टूडेंट्स व्हाई दीज आर सेंटेंसेस, बिकॉज नाउन है और वर्ब है, बस दैट्स इट. The simplicity of noun-verb construction is useful. At the very least, it can provide a safety net for your writing. Strunk and white caution against too many simple sentences in a row. But simple sentences provide a path you can follow when you fear getting lost in the tangles of rhetoric. यहाँ पर वापस rhetoric का मतलब है the detailed rules of grammar. So the author says that the best thing is ये जो simple sentences होते हैं where we take a noun and a verb, एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं. और अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं आती तो एटलीस्ट दे विल हेल्प यू इन मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस. दो स्ट्रंक एंड वाइट दे कॉशन दैट बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस एक साथ यूज़ करना इज़ नॉट गुड. बट फिर भी ऑथर कहता है कि सिंपल सेंटेंसेस एटलीस्ट आपको बहुत सेव करते हैं एंड दे शो यू द पाथ. स्टूडेंट्स गेटिंग लॉस्ट इन द टैंगल्स ऑफ रेटरिक. अब रेटरिक, टैंगल्स ऑफ रेटरिक क्या होता है, वो एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर. ऑल दोज रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, दोज मॉडिफाइंग फ्रेजेस, दोज अपोजिटिव्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. So all these are basically examples of tangles of rhetoric. So if a person does not want to get entangled in these things, very simple, you people still keep making simple sentences. And what are simple sentences? Take a noun, take a verb. और बन गया अपना सिंपल सेंटेंस. ठीक है, चलिए. सो इफ यू स्टार्ट टू फ्रीक आउट एट द साइट ऑफ सच अनमैप्ड टेरिटरी, अनमैप्ड बाय यू एटलीस्ट, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ दैट रॉक्स एक्सप्लोड, Jane transmits, mountains float, and plums defy. So grammar is the pole. Grammar is the pole you grab to get your thoughts up on their feet and walking. तो कल मिलाकर स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है. इवन इफ यू पीपल आर नॉट एबल टू फॉलो ऑल द डिटेल्ड रूल्स ऑफ ग्रामर, और इफ यू पीपल डोंट वांट टू गेट एंटैंगल्ड इन द टैंगल्स ऑफ रेटरिक, जिसमें सब कुछ आ गया. देखिए, मॉडिफाइंग फ्रेजेस, पॉजिटिव्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इन सब में अगर नहीं फंसना चाहते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप सिंपल सा बेसिक्स ऑफ ग्रामर समझ लो, नाउन्स एंड वर्ब्स को समझ लो, एंड द जॉब इज डन. So students, the last sentence gives a very good conclusion. It says, grammar is the pole you grab to get your thoughts up on their feet and walking. Okay students, done, perfect. Chaliye, now students, it is time to solve the questions. All right, coming on question number 1. So what's your correct answer? क्या लगता है? Question number 1, what is the best answer? Which one of the following quotes best captures the main concern of the passage? So this is the main gist of the passage. What is the main concern of the author? So nouns and verbs are the two indispensable parts of writing. Without one of each, no group of words can be a sentence. हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑप्शन लगे, अंडरस्टैंड, बट देखते हैं बाकी ऑप्शंस भी कंपेयर करें. स्ट्रंक एंड वाइट कॉशन अगेंस्ट टू मेनी सिंपल सेंटेंसेस इन अ रो, बट सिंपल सेंटेंसेस प्रोवाइड अ पाथ यू कैन फॉलो व्हेन यू फियर गेटिंग लॉस्ट इन द टैंगल्स ऑफ रेटरिक. आई थिंक स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर. टॉकिंग अबाउट कि बस सिंपल सेंटेंसेस आपको बचा लेते हैं, एंड एटलीस्ट सिंपल सेंटेंसेस तो आपको बनाना आना ही चाहिए. तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये बहुत पर्टिकुलर हो जाएगा. थर्ड, द टेलिंग क्लॉज, द इम्पॉर्टेंट क्लॉज हियर इज अनलेस ही इज सर्टन ऑफ डूइंग वेल. नॉट एट ऑल. ये तो स्टूडेंट्स ऑथर एक्सप्लेन करने के लिए इसको यूज़ कर रहा है. एन ऑथर सेज दैट
Okay, when William Strunk says, unless he is certain of doing well, but author कहता है वो आदमी certain होगा कब? When he understands the basics of grammar. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो मेन कंसर्न है that is understanding the basics of grammar. Okay, so bad grammar produces bad sentences. Students या तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा. So the correct answer will be one out of these two. अब क्या लगता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बेस्ट आंसर? So if you want to capture the overall, the main concern of the passage is not only nouns and verbs. The main concern is the basics of grammar. So students, bad grammar produces bad sentences. So fourth option becomes the biggest concern here. Actually, the main concern is fourth option. और वहीं से तो पैराग्राफ पूरा पैसेज स्टार्ट हो रहा है. So students, taking on, let me take the first one once again. Nouns and verbs are two indispensable parts of writing. सिर्फ ये बताना कि these two are the two indispensable parts और इसके बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, that is not the main concern. The main concern is to understand the basics of grammar. So I think the best option which summarizes the main concern is fourth one. Coming on second, which one of the following statements are false could be seen as supporting the arguments in the passage? ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज को बहुत ढंग से समझना. See, try to understand which of the following statements, if false, will support the arguments in the passage. इसका मतलब है अगर ये false ना हो और ये true हो जाए तो क्या होगा? फिर वो support नहीं करेगा, वो क्या करेगा? weaken करेगा. understand. तो इसका पूरा meaning आप लोग change कर लें. तो what you people have to understand is among the four options, which option is going to weaken the arguments given in the passage. So this actually becomes the indirect meaning of this particular question. ओके तो आप तो ये मान के चलो कि इन चार ऑप्शंस में से विच ऑप्शन इज गोइंग टू वीकन द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज. ओके तो इस तरह से इफ फॉल्स विच सपोर्ट्स, इफ फॉल्स विच वीकन्स, ऐसे कई बार लैंग्वेज को ट्विस्ट करने की कोशिश होगी और कैट में ये बहुत कॉमनली होता है. अंडरस्टैंड. ओके तो स्टूडेंट्स, इफ फॉल्स कौन सा ऑप्शन सपोर्ट करता है? इसका मतलब है इफ इट इज ट्रू इट विल वीकन. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. तो मैं तो इन चारों को ट्रू मानकर डायरेक्टली उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करूंगा जो वीकन करेगा. ओके चलो. An understanding of grammar helps a writer decide if he is writing well or not. I think students ये तो सपोर्ट ही करेगा. Perish the thought that complete sentences necessarily need nouns and verbs. क्या लगता है स्टूडेंट्स? Perish the thought that complete sentences necessarily need nouns and verbs. आप इस थॉट को ही हटा दो कि कंप्लीट सेंटेंसेस में नाउन्स एंड वर्ब्स चाहिए. अरे भाई, ऑथर सेज दैट एक सेंटेंस तभी बनता है व्हेन देयर इज अ नाउन एंड अ वर्ब. तो अगर मैं इसी थॉट को पेरिश करूंगा तो डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज गोइंग अगेंस्ट व्हाट द ऑथर इज सेइंग इन द पैसेज. सो डेफिनेटली माय करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन. Second option becomes the correct answer because it goes against what the author is saying in the passage. Coming on the third one, it has been observed that writers sometimes disregard the rules of rhetoric. Anyway, that is something which is given in the passage. So third option is not the correct answer. Third option तो students वैसे भी passage में दे रखा है, understand. And regarding grammar, women writers tend to be more attentive to method and accuracy. Students, this option is totally irrelevant because nothing is mentioned about women writers. Anyway, students, अगर आपने इस पूरे पैराग्राफ को समझा है, there is only one option which goes against what the author is saying, and that becomes the second option. चलिए, coming on. All of the following statements can be inferred from the passage except that. Yes. इसका मतलब है students, we need to find out that option which cannot be inferred from the passage. The first option, the subject and predicate relation is the same as the noun and verb relationship. Absolutely. आप सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ोगे तो पता चलेगा सब्जेक्ट मतलब नाउन, प्रेडिकेट मतलब वर्ब. सो फर्स्ट ऑप्शन तो वी कैन इन्फर. The primary purpose of grammar is to ensure that sentences remain simple. Not at all. That is not the primary purpose of grammar. I think students, second option, this we are not able to infer. Check करते हैं बाकी सब options. Sentences do not always have to be complete. Yes, this is what the author says. तो ये sentence तो बिल्कुल सही है. And author यही तो कहता है, sentences incomplete भी हो सकता है, understand? Okay, and author उसी को justify करता है. Grammar police is a metaphor for critics who focus on linguistic rules. Absolutely.
Okay, grammar pullers. These people are too particular about linguistic rules, and that is the reason कहीं पर भी अगर linguistic rules follow नहीं होते, so these are the people who keep criticizing. So definitely, students, fourth option also we can infer. So the correct answer is second option. The primary purpose of grammar is to ensure that sentences remain simple, not at all. ये तो ऑथर कहता है कि if you don't want to get entangled in the tangles of grammatical rules, you can keep your sentences simple. At least that much of basic understanding of grammar should be there. But how beautifully paper setter ने इस ऑप्शन को फ्रेम किया ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए. Anyway, students, second option we cannot infer. Fourth one, take any noun, put it with any verb, and you have a sentence. It never fails. Rocks explode, gen transmits, mountains float. None of the following statements can be seen as similar except. So students, among the four options, we need to find out. We need to find out जिस तरह की रीजनिंग और जिस तरह का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दे रखा है इन दीज एग्जाम्पल्स. रॉक्स एक्सप्लोड, हम कर क्या रहे हैं? एक नाउन लिया, एक वर्ब लिया, एंड दैट बिकम्स अ सेंटेंस. The students, among the four options, we need to find out. Okay, which option has a similar kind of combination, has a similarity with the kind of examples and the sentence which is given in the question. Try to understand what the question says. None of the following statements can be seen as similar except. Okay, so इसका मतलब है we need to find out that option which is similar to what is written here. The students, if you compare all the options, a collection of people with the same sports equipment is a sports team. Not at all. This reasoning is not correct. Take an apple tree, plant it in a field, and you have an orchard. Even this is not correct because एक apple tree से कभी orchard नहीं बनता. Orchard तो तब बनता है when you have so many trees together. तो एक apple tree लो, उसे plant करो, orchard बन जाएगा. No. एक noun लो, एक verb लो, sentence बन जाएगा. That is okay. But एक apple tree लो, plant करो, orchard बन जाएगा. That is not correct. So second is not correct. A group of nouns arranged in a row becomes a sentence. अब आप सोचो students, group of nouns. When we are taking group of nouns arranged in a row becomes a sentence, nowhere this reasoning is it matches what is given here. So even third option cannot be the correct answer. Take any vegetable, put some spices in it, and you have a dish. Absolutely, fourth option is similar. यही तो कहता है, noun लो, verb लो, sentence तैयार. कोई vegetable लो, कोई spices डालो, dish तैयार. The students, fourth option is similar to what is given in the question. Coming on the last one, fifth. Inferring from the passage, the author could be most supportive of which of the following practices. Okay, तो author का idea तो समझ में आ ही गया. Okay, he advocates understanding the basics of grammar. So students, keeping that in mind, which one of the following practices the author could be most supportive? First option, a creative writing course that focuses on how to avoid the use of rhetoric. A creative writing course that focuses on how to avoid the use of rhetoric. I think that is not the main purpose. Author कहीं पर भी students rhetoric के against नहीं है. But author ये कहता है कि अगर आप rhetoric follow नहीं कर पाते तो at least basics तो देखो, understand. The critic of standardized rules of punctuation and capitalization. Not at all. Author is not a critic. Author actually says that कुछ basic rules grammar के follow होने ही चाहिए, understand. Third, a campaign demanding that a writer's creative license should allow the breaking of grammatical rules. Students, ये misinterpretation है. Author कहीं पर भी grammatical rules को break करना इस बात को advocate नहीं कर रहा है, understand. So even third option is not the correct answer. Fourth, the availability of language software that will standardize the rules of grammar as an aid to writers. Definitely, author will advocate having this option. Because I guess author जब इस बात को support करेगा, let's have a software. At least grammar के जो rules हैं उन्हें standardize कर दें, तो sentences proper बनेंगे. आप एक चीज़ समझना, author focuses on making proper sentences. आप incomplete sentence बनाओ, but sentence तो बनाओ proper. एक noun और verb तो लो properly. That is what the point is. Author basics of grammar को हमेशा support कर रहा है. इसीलिए the correct answer here is fourth option. Okay students, so कैसा लगा? Yes. तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि चलो ये तो बहुत अच्छे लेवल के पैसेजेस हैं, बट देयर माइट बी सच स्टूडेंट्स जिन्हें इस लेवल के पैसेजेस जल्दी समझ में नहीं आते. दे वांट टू स्टार्ट विद बेसिक्स.
So we do have a complete online course also. Icon is CAT application पर ठीक है we people have dedicated courses on vocab, dedicated courses on reading comprehension, beginners level and advanced level. So on a daily basis, we people are continuously posting so many video lectures here. So if you people want to purchase that course, I think 5-6 months में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. At the same time, इस पूरे YouTube चैनल पर स्टूडेंट्स यू पीपल आर हैविंग so many videos on maths, so many videos on English and very soon on DILR. इन सबको वॉच करो and get enroll yourself for the fantastic courses of Icon ESCAT at a very affordable pricing. Okay, so thank you very much. See you very soon. Bye bye.